Hello everyone. Good evening. Good evening बच्चों. Hi, I think we're live. Please give me a confirmation. I hope my audio video is all clear. Good evening. I can already see so many students waiting for the session. I am sure and I know that it's a much awaited session. Hi, Iram. Hi, Satish, Manu, Anamika, Lalit. Good evening, Ankur, Gopi, Sai, Vandana, Komal, Radhe Shyam, Soni, Hema Malini, Wah. Blogger Mayank, MD, Luffy, Gokul Raj, Anushka, Aditya. Marathon is already there and it's relevant. I have pushed a marathon update also. All clear. Thank you so much, Vineet, for the confirmation. Hi, everyone. Just received the books. Great. Good evening, Sagar, Vikas, Bhavya. Vikas, actually the names are scrolling fast. I'm sorry. Nay, I didn't have dinner yet. Please provide some marathon questions for CMA final or old syllabus. Okay. Now, because I have so much to tell you, I have so much to share with you. तो भाई देखते हैं कि क्या करने वाले हैं. And most of the students are definitely waiting for this session and one more session that you all have been waiting for, I know ki is the important set of questions. तो उसके लिए भी I'll give you an update. Thank you बच्चों. Now let's begin. Right. Okay. Now, what more things are going to come forward? Ma'am, we have very few days left for our examination. First of all, I welcome everyone to our live session on YouTube. I request everyone to please drop one like so that it can reach as many students as possible and everyone can be benefited from it. And at the same time, it makes me motivated for the same, right? So one like everyone, that would be really full of gratitude from my end. Okay. Now, I think I need to block. Yes. Wait. Today we have the most exciting topic to discuss, how to write answers in law. But at the same time, मुझे पता है that many of you are also waiting for a set of important questions because if your preparation is not up to the mark, then also you need these questions. And if it is up to the mark, then also you need the questions. कि अब क्या करना चाहिए, ma'am? We have already done with the preparation. We should not miss out anything important. So yes, definitely 100% I'm going to bring the session or the questions, whatever is possible, super 30, super 50 important set of questions for CMA final as well as CMA inter students. So don't worry on that part. Okay, today we are here to discuss how to write answers. So we will focus on that. Of course, you are free to ask the related doubts as we go along. What is this session relevant for or for who this session is relevant? It is relevant for CMA final as well as CMA inter students. Ma'am, common questions कैसे हो सकते हैं? Well, I'll tell you one by one. है common questions. CMA final और CMA inter के syllabus में बहुत कुछ नहीं, but काफ़ी कुछ common है. ठीक है? So, it is relevant for all the CMA final and CMA inter students, whether you are for 2016 syllabus or 2022 syllabus. आज का जो हमारा सेशन है दोनों के लिए रेलिवेंट है. मैम, ये जो सेशन हम करने वाले हैं, इज इट गोइंग टू बी इन इंग्लिश और इज इट गोइंग टू बी इन हिंदी? तो ये हिंदी इंग्लिश का मिक्स होने वाला है, बट ऑफकोर्स 80% यू कैन कंसिडर इट टू बी इन इंग्लिश ओनली. तो 80% इंग्लिश, 20% वो हिंदी तड़का लगाने वाली हिंदी रहेगी. ठीक है, चलो. ओके, क्वेश्चन पैटर्न हैज चेंज्ड. क्या बहुत सारे आपके मन में सवाल हैं? वन बाय वन आई एम गोइंग टू आंसर देम ऑल. वन डे रिविजन नीड बिफोर एग्जामिनेशन. वेल, द एक दिन पहले अगर आपको रिवाइज करना है ना, देर इज अ मैराथन, यू कैन स्पीड वॉच और आप रिवाइज कर सकते हो बिकॉज जस्ट अ डे बिफोर एग्जाम स्टूडेंट्स हैव देयर ओन प्लान्स. और क्या होता है, कहीं ना कहीं वीडियो से डिस्ट्रैक्शन होता है. सो लाइव सेशंस आर कमिंग अलॉन्ग. अब थोड़े दिन, 3-4 दिन आपको हर दिन लाइव सेशंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे. ओके, सो नाउ
I can see a lot of students are already waiting. तो आज का session हम शुरू करते हैं. Okay, I am excited to get started and hope you will find today's session both interesting as well as informative. So once again, feel free to ask the doubts, relevant doubts, of course, related doubts, of course, to whatever I'm trying to tell you, whatever tips and tricks I'm trying to give you when you write your answers as we go along. I just want to ensure that everyone who has joined the session or who watches the video later on leaves this video with a clear understanding, clear perspective, and is more confident about writing answers. Right? I won't take much of your time because I know that exam is very much near and you have a lot of preparation to do. So without wasting further time, let's begin our session. Right? Thank you so much, all the students who have already liked the video. Okay, so here we begin. According to the recent MTP which was released by the institute, although we still don't have absolute clarity and we can never say कि अगर institute ने हमें ऐसे questions दिए हैं तो exactly the same type of questions will be asked or there will be same paper pattern. MTPs only suggest us a paper pattern, MTP, MQP, जो भी आप बोलो, it only suggests us a paper pattern and there are 90% chances that yes, your paper pattern will be like this. But be prepared for the worst also. So institute has taken a stand this time and has set a standard set of paper. Standard set means 30% objective, 70% subjective, which is usually there in the complete industry. Right, so they have come up with this standard for both CMA Inter as well as CMA Final Law students. So you have 15 MCQs of 2 marks each in section A, which carries 30 marks, and thereafter you have 7 questions in section B, out of which you have to answer only 5 questions. Each question is going to contain 14 marks, right? Again, I would say this is the suggestive scheme or suggestive paper pattern through MTP or MQP. Okay. But if it comes this way, I'll be very happy because this is a standard that now institute is setting up. Okay. Pehla question. First question. I'll take it from the chat itself. Ma'am, there are 15 MCQs, so we have to just select an option or also write justification. See. Going by the marks, if one MCQ is being asked for 2 marks, although the institute hasn't stated properly, and this has created a lot of confusion among students whether we have to write the justification or we don't have to write the justification. In paper, we expect the clarity. So in examination, when you will be asked, you should be, and 90% chances there will be clearly written that write this particular MCQ along with justification. Even if it is not written, my request and my suggestion would be that you must write the justification. भाई देखो यार, CMA इंटर का अगर हम लोग MQP खोल के देखेंगे, इतने easy से questions पूछते हैं, and the question of 2 marks without justification, it is not justified at all. तो मेरे हिसाब से तो आपको 100% justification लिखना चाहिए. If it is not clarified, then also. Okay. Don't elaborate the justification too much because you have time. But if 2 marks are being awarded to a particular question, definitely you are being given that much time also. तो आराम से लिखो ना justification, किस बात की चिंता है, किस बात की हरी है. ओके, चलो. सो पहली चीज ये क्लियर हो गई. ओके, नाउ ऑफ कोर्स क्या करना चाहिए मैम हमें? That is the next question. What should we attempt first? Should we attempt the MCQs or should we attempt the descriptive or the subjective questions? मतलब कौन सा section पहले attempt करना चाहिए? Section A या Section B? Again मेरी advice रहती है Section A. Advisable है, आपका individual choice हो सकती है, whatever you want to select, but this is advisable. Whatever advices I'm giving you, that is based on the analysis, that is based on the experience of thousands of students which have accumulated with me, right? तो उसके हिसाब से भाई सेक्शन ए पहले करना एडवाइजेबल होता है. उसके 2 रीजंस होते हैं. पहला रीज़न, यू गेन इमेंस कॉन्फिडेंस क्योंकि आप 30 मार्क्स की एक अच्छी खासी कवरेज कर लेते हो. एंड दूसरा रीज़न, सिर्फ
यू हैव टू सिलेक्ट द 4 ऑप्शंस एंड उन 4 ऑप्शंस को सिलेक्ट करने में अभी आप पैनिक नहीं करते हो व्हेन यू आर बिगनिंग विद द क्वेश्चन, राइट? व्हेन यू आर बिगनिंग विद द क्वेश्चन पेपर टुवर्ड्स द एंड इफ यू गो एंड अटेम्प्ट सेक्शन ए, तो क्या होता है, टाइम बहुत कम है, पैनिक वाली सिचुएशन अगर आ गई तो उसमें सही आंसर की जगह भी हम गलत कर देते हैं. सो डिस्पाइट नोइंग द करेक्ट आंसर वी इवेंचुअली एंड अप इन writing an incorrect answer. So first, with a calm, peaceful mind, go for section A and attempt all the 15 questions. And if it's clarified in the paper, great. Even if it's not clarified, suggestion is that you must write justification. ठीक है? नहीं, 2 लाइन का लिखो बस काफ़ी है. 2 लाइन का लिखो, जस्टिफिकेशन काफ़ी है. जस्टिफिकेशन पे नंबर मिलते भी है तो बड़े लीनियंट वाले जस्टिफिकेशन पे नंबर मिल जाते हैं. ओके, नाउ टुडे ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट राइटिंग प्रैक्टिस. तो जब हम राइटिंग प्रैक्टिस की बात करते हैं, सेक्शन बी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? तो आज की क्लास में हम इसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं. ठीक है मैम. फर्स्ट ऑफ ऑल, सम बेसिक राइटिंग टिप्स फॉर सेक्शन बी. क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू वुड नो दीज बेसिक राइटिंग टिप्स, बट स्टिल आई वॉन्ट टू एम्फोसाइज ऑन ईच बेसिक राइटिंग टिप बिकॉज कई बार हम भूल चूक हो जाती है हमसे. ठीक है, उसके पहले मुझे आप कमेंट्स पे बताओ कि भाई आप क्या पेन्स चेंज करोगे, हाँ या ना? क्या आप अलग अलग पेन से लिखोगे, लाल, नीला, काला, हरा, क्या लिखोगे? Do you have that clarity how you should be attempting a professional paper? Come on everyone, let's see how many of you have that clarity with you. Come on, लिखो फटाफट से चैट में लिखो. सिर्फ आप मुझसे सवाल नहीं पूछोगे, मैं भी आपसे पूछूंगी. ओके, वेट व्हाट आई एम आस्किंग यू, उसका आंसर दो पहले. एकदम फायर की तरह यू आर शूटिंग क्वेश्चंस ऑन मी. नहीं, not at all. No. I'm happy to hear that. No fancy pens changing, nothing. You're writing a professional pen, right? Yes. आपको ऐसा नहीं है कि आप, हाँ, you can use that. That's it, right? Good. चलो, बहुत अच्छी बात है. I can see that clarity in the chat box. प्लीज़ बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, मैं एक बात फिर से आप लोगों को बोल दूं कि येस, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू सुपर 30 और सुपर 50, वॉट एवर वी डिसाइड. दैट फाइल इज अंडर प्रिपरेशन. तो सुपर 30 हम डिसाइड करेंगे या सुपर 50 डिसाइड करेंगे, दैट्स नॉट येट confirmed, but maybe tomorrow or day after we'll have a session for the same or we'll release that file. Okay, so don't worry on that part कि मैम important questions बता दो. ABC analysis, that is something that I've already pushed. So if you are asking about the sequence of revising, then that is already being released. You have already the marathon or the revision videos. You can revise from the same. उसमें क्या अमेंडमेंट है मैम, अपडेटेड है, तो मैंने आपको बता दिया था इस अटेम्प्ट के लिए ज़्यादा अमेंडमेंट्स है ही नहीं. ठीक है, तो एक आधी चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है, दैट आई ऑलरेडी पुश थ्रू एन अपडेट, राइट? सो कीप दैट इन माइंड एंड यू कैन रिवाइज द एंटायर कंटेंट. चल, ओके, नाउ व्हाट आर द बेसिक राइटिंग टिप्स? Write each question on a fresh page. Yesterday I got a question from one of my student कि मैम क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि क्वेश्चन 5 का पार्ट ए हमें आता है प्लस क्वेश्चन 6 का पार्ट बी हमें आता है. क्या हम ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हैं कि ये भी 7 मार्क्स का है, ये भी 7 मार्क्स का है, हमने क्वेश्चन 5 का पार्ट ए अटेम्प्ट किया एंड क्वेश्चन 6 का पार्ट बी अटेम्प्ट किया. कैन वी डू दैट? The answer is a no. You cannot do that. If you choose to attempt question 5, you have to attempt all the parts of question 5. If you choose to attempt question 6, you have to choose all the parts of question 6. So first of all, you have to decide which all questions I want to attempt. और उसके बाद उस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स आप एक साथ करेंगे. वो सारे पार्ट्स खत्म हो जाएंगे. द नेक्स्ट क्वेश्चन यू विल स्टार्ट ऑन अ फ्रेश पेज. सपोजिटली यू नो पार्ट ए, यू डू नॉट नो पार्ट बी. ट्राई टू लीव सम स्पेस एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बहुत ज़्यादा स्पेस मत छोड़िए बिकॉज यू डोंट नो दैट क्वेश्चन. सो इवेंचुअली अगर आप लास्ट में कुछ लिखना भी चाहोगे, शायद आप बहुत कम कंटेंट लिख पाओ.
right? So leave some space and switch to the next question. At the end of the paper, if you have time, come back to the leftover question, because negative marking तो है नहीं ना. So try to attempt 100% paper. तो उसके related आपको जितनी भी बातें पता है, please उसको लिखो. Okay, so write that. All parts together, this is something that I've already covered. Attempt 100% paper. Question number जब आप लिखते हो ना, write it in the center. Don't write it in the left margin over here. No. वाई नॉट मैम? बिकॉज कई बार क्या होता है, वो खोलने में या आपने कुछ एक्स्ट्रा शीट लिया, कुछ भी ली, तो वो साइड लाइन हो सकता है. राइट इन द सेंटर, एकदम अच्छे से दिखेगा. ओके. नो नो नो, आई एम गोइंग टू टेल यू दैट. राइट, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है. क्वेश्चन नंबर आप सेंटर में लिखेंगे. डू नॉट करेक्ट एक कोट इनकरेक्ट सेक्शन नंबर्स. इसका भी अभी मैंने ना यहाँ पे एक जबरदस्त कुछ चीजें बना रखी हैं आपके लिए. सो आई टेल यू व्हाट हैज टू बी डन फॉर द सेक्शन नंबर्स. ओके, सो केस स्टडीज की भी बात हम बाद में करेंगे. राइट इन पॉइंट्स और शॉर्ट पैराग्राफ्स. डोंट इलाबोरेट आंसर्स अननेसेसरली. और बहुत लंबे लंबे आंसर्स नहीं लिखने हैं, शॉर्ट लिखने हैं, मतलब पॉइंट में लिखने हैं, और छोटे छोटे पैराग्राफ्स चेंज करते रहने हैं. ओके. डू नॉट यूज योर ओन एब्रीविएशंस. अक्सर हम ऐसे एम्प्लॉय लिख देते हैं, ठीक है, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बीओडी लिख देते हैं, ठीक है, या कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को वी एंड अप राइटिंग सीआईआरपी. नो, वी डोंट हैव टू डू दैट. ओके, नॉट राइटिंग सच टाइप ऑफ शॉर्ट फॉर्म्स. ऑल्दो कॉमनली हम याद करने के लिए लिख देते हैं, और जो सोशल मीडिया लैंग्वेज चलती है, यू हैव, भाई यू ऐसा नहीं होता है, राइट? सो यू डोंट हैव टू यूज दैट सोशल मीडिया लैंग्वेज इन योर आंसर्स. ओके. And lastly, remember you will be awarded marks for the content you write and not for your handwriting. I have often seen students repenting over their handwriting कि मैम हमारी handwriting तो बहुत खराब है. तो आपकी हैंडराइटिंग पे मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं अनलेस आपकी हैंडराइटिंग कुछ ऐसे हो कि समझ में ही नहीं आ रही है. सो इफ यू हैव अ बैड हैंड राइटिंग देन यू नीड द नीट प्रेजेंटेशन इवन मोर. तो आपको क्या लिखना है, बहुत क्लियरली उन वर्ड्स को लिखने की कोशिश करनी है. एंड फॉर द स्टूडेंट्स हु डू नॉट हैव गुड हैंड राइटिंग, प्लीज एंश्योर कि आप कुछ चीज़ों को अंडरलाइन भी करें. एज वी गो अलॉन्ग आई विल कीप टेलिंग यू कि एग्जैक्ट एक अच्छा आंसर आप, एक आइडियल आंसर आप कैसे लिख सकते हो. और एक बात मैं और आपको बताने वाली हूं आज के सेशन में कि because especially after this particular exam I received so many certified copies of students कि मैम इस क्वेश्चन में हमारे हिसाब से हमें I should have got 5 marks and I have got only 3 marks, और I should have got 7 marks and I have got only 2 marks. तो क्यों इतने मार्क्स का वेरिएशन हो रहा है? One thing you need to understand before you proceed further कि ये आपका कोई प्रैक्टिकल पेपर नहीं. दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकल एग्जाम कि 2+2 4 ही आएगा. ये एक लॉ का थ्योरेटिकल एग्जाम है एंड एवरी एग्जामिनर विल बी डिफरेंट. सो इट मे सो हैपन दैट यू एंड योर फ्रेंड दे बोथ हैव रिटन द सेम आंसर, पर भाई उसको 4 नंबर मिले, आपको 3 ही नंबर मिले. सो दिस मे हैपन, राइट? ओके. आंसर कितने बड़े लिखे? अंडरलाइंग इज अनएथिकल अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट. आई एम नॉट सजेस्टिंग यू टू अंडरलाइन एनीथिंग. अंडरलाइनिंग आपको सिर्फ और सिर्फ एक सिचुएशन में करनी है, राइट? इट्स नॉट अनएथिकल. when your handwriting is not good and you're writing some limit on which you want to draw attention of the examiner, then that is something which is permitted. Okay, now आंसर कितने बड़े लिखे वो भी बताती हूँ. Right. See, there is a student with me और वो बोल रहा है मैम I covered everything in emotional intelligence in June exam. They gave me only 1 mark. Ma'am, why? देखो, in rare situation this has happened. In rare situation. मतलब अगर मैं बोलूँ कि I received around 50 certified copies of students to just cross check with me कि मैम ये नंबर गलत दिखे हैं या हम कुछ गलत समझ रहे हैं, तो out of that I would say कि 5 copies ऐसी होंगी where I found कि नहीं, this student deserved more, ये तो इसके साथ गलत हुआ है. और उसमें से एक कॉपी ऐसी भी थी where I found कि एक amended आंसर लिखा था उस स्टूडेंट ने और इंस्टीट्यूट ने अपने सजेस्टेड में एक बहुत पुराना चीज डाल दिया था.
ठीक है, मतलब जमाने पहले दैट थिंग हैज बीन अमेंडेड और इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, अपने सजेस्टेड में उसको पुराना ही डाल दिया है और जिस बच्चे ने अमेंडेड लिखा है उसको मार्क्स नहीं दिए हैं। तो ये क्या हो रहा है भाई, गलत हो रहा है। तो ऐसी नाइंसाफी जो स्टूडेंट के साथ हो रही है, ठीक है, दिस इज द ट्रूथ की हो रही है। और ऐसा नहीं है यहां हो रही है मैम, हमारा इंस्टीट्यूट ऐसे कर रहा है, इट इज प्लेइंग विद द लाइव्स ऑफ द स्टूडेंट्स, नो नथिंग लाइक दैट। डोंट टेक इट टू योर हार्ट। आप अपना पार्ट कर सकते हो, इंस्टीट्यूट अपना पार्ट करता है। सो ये ब्लेम गेम वी डोंट हैव टू स्टार्ट दैट, राइट। बट ये किसके साथ हो रही है? आउट ऑफ 50 आई वुड से देयर इज वन स्टूडेंट जो ये सफर कर रहा है। बाकी जो 49 स्टूडेंट्स हैं, दे हैव टू आइडेंटिफाई देयर ओन मिस्टेक, बिकॉज वो कहीं ना कहीं कुछ गलती कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर गेटिंग लेसर मार्क्स। ओके, नाउ नॉट टुडे, बिकॉज इफ आई शो यू द सर्टिफाइड कॉपी आप एक अलग जोन में चले जाओगे। आई डोंट वॉन्ट टू डिस्करेज यू, आई डोंट वॉन्ट दैट, दिस इज नॉट द राइट टाइम टू शो यू सर्टिफाइड कॉपीज, राइट। आई एम गोइंग टू टेल you the best possible ways and how you can improve your writing skills, ठीक है। तो ये बेसिक राइटिंग टिप्स के बाद लेट्स प्रोसीड फर्दर। We have two types of questions in section B. One is the case study and the second is direct or descriptive questions, right? I will tell you that also. एक बच्चा पूछ रहा है, there's a student who's asking me, ma'am, those students whose English is too weak, what should they do? Now, if your English is weak, let me take you through the very first question that we are going to discuss over here. ठीक है, I have taken up, so I have written your point. Please don't keep on repeating the answer. Weak English, इसके लिए क्या करना चाहिए? ये पहली आपकी क्वेरी है. I have already written it, right? Can we write straight to the point for case study direct without any introduction? Case study introduction, whether it's needed or not. So I'm writing your queries. I will deal with that. Okay. Now, I have taken in this class or in today's class, this is not a set of important questions that I'm discussing over here या मैं आपको लिखवाने जा रही हूँ. No, I have taken two questions. One is the direct question and second is the case study based question. So I have taken both the questions and I will actually make you write and I will tell you how should be the ideal answer presentation for securing 7 marks out of 7 marks. तो अगर आपको 7 में 7 नंबर चाहिए तो आपको इस तरीके से आंसर लिखना चाहिए. Of course, you don't have to make the table over here. Table मैंने लिखा है just to make you that clarity. ठीक है, जस्ट टू गिव यू दैट क्लैरिटी कि अगर आप सिर्फ इतना लिखते हो तो आपको कितना नंबर मिलता है. नाउ व्हाट हैपेंस इफ अ स्टूडेंट, एंड नाउ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज रेलिवेंट फॉर बोथ सीएमए फाइनल एंड सीएमए इंटर स्टूडेंट्स फॉर बोथ द सिलेबस. ठीक है, तो ऐसा चुन के क्वेश्चन हम लेके आए हैं. ठीक है, हाँ, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर की अगर हम बात कर रहे हैं, enumerate the provisions of Companies Act 2013 regarding disqualification of appointment of directors. Now what students will do, they will write unsound mind, ऐसे लिखना शुरू करते हैं. Following persons are disqualified. पहला लिख दिया अनसाउंड माइंड, दूसरा लिख दिया इंसॉल्वेंट. ठीक है, इस तरीके से द स्टूडेंट्स स्टार्ट राइटिंग. Now when they write this, they feel that I have written 2 correct points and I should be getting 2 marks. 7 marks का question है, I have written 2 correct points and I should be getting 2 marks. भाई अगर मुझसे पूछो तो मैं तो आधा नंबर दूंगी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में. क्यों मैम आधा नंबर? आइडियली हर पॉइंट का आधा नंबर शायद हो जाता, बट आई विल एक्चुअली गिव यू ओनली हाफ मार्क्स. व्हाई? When you are writing unsound mind, is it giving you a clear indication कि unsound mind ही disqualified हो जाता है? Then you have your basics weak. Unsound mind तो हम हर किसी इंसान को बोल देते हैं. Unsound mind who is declared by the court. तो declared by competent court या declared by court, ये तो आपने लिखा ही नहीं ना. और उसके बाद आप सोचते हो that I have written the correct answer and I should be getting marks. How will you get marks? इंटेंशन क्या था? उसको जिसको कोर्ट डिक्लेयर कर देता है अनसाउंड माइंड का, दैट पर्सन बिकम डिस्क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर. दैट इज द होल इंटेंशन. यू हैव नॉट रिटन दैट. यू गेट माई पॉइंट?
So, well, you will not get marks for this, and then you will feel that why haven't I got marks, right? अब ऐसी सिचुएशन में मुझे इतना बताओ कि अगर किसी बंदे की इंग्लिश वीक है, okay, fine, your English is weak. You will not be able to frame fancy sentences. That is not needed in law. You will not be able to write elaborate introduction paragraphs. That is not needed. उसके लिए नंबर ही नहीं मिलते हैं. मार्क्स किस पे मिल रहे हैं? अनसाउंड माइंड, है ना? तो अब अनसाउंड माइंड को तो आप भी अनसाउंड माइंड ही बोलोगे ना, इवन इफ योर इंग्लिश इज वीक, और यू विल चेंज इट टू समथिंग एल्स. क्या आप यहाँ पे हिंदी में तो नहीं लिख रहे हो, राइट? इवन इफ योर इंग्लिश इज वीक, स्टिल यू विल राइट इट दिस वे ओनली. तो भाई इंग्लिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत ही कहाँ है? ऑल्दो लॉ इज अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट एंड यू हैव टू राइट, बट स्टिल यू डोंट नीड दोज फैंसी लैंग्वेज. आप सिर्फ क्रिस्प प्रोविजन लिखो, यू विल गेट मार्क्स. सो हाउ शुड वी राइट, मैम? दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ 7 मार्क्स. ओके, नाउ एक स्टैंडर्ड टाइम आपको चाहिए होती है कि मैम वर्ड लिमिट क्या होती है? व्हाट इज द स्टैंडर्ड वर्ड लिमिट फॉर राइटिंग 7 मार्क्स क्वेश्चन? कोई स्टैंडर्ड वर्ड लिमिट है ही नहीं. ऐसे थोड़ी ना लिख रहे हैं हम. वी आर नॉट appearing for a BCom exam that we have to fill at least 3 pages for a 7-mark question. No. Whatever we know with respect to the provision, only that much we can write. That's why I have taken 2 contradictory type of questions. In first question which I have taken, see, there is so much content to write, and eventually you have to write the entire content. And in the second question that I have taken, it is also of 7 marks, but we have only this much content to write. तो बस इतना ही लिखना है हमें, वो भी उसका ये हटा दो, बस इतना सा ही हमें लिखना है. और यहाँ पे देखो हमें कितना कुछ लिखना पड़ेगा, राइट? So it depends on what content you have. आप content के beyond नहीं लिखोगे. But yes, if you have only 2 lines content, तो उसको तो लिखना पड़ेगा. फिर आपको सोचना पड़ेगा कि इस particular topic को हम किससे relate कर सकते हैं. That we will write. Because 7 marks के लिए पूछ रहा है. अभी हम जब second question पे जाएंगे, I will actually tell you how do you elaborate, because you need to elaborate for a 7-mark question. Okay, चल. तो standard वर्ड लिमिट नहीं है, बट यहां पे हमसे पूछा गया है, व्हाट हैव बीन आस्क्ड, प्रोविजन रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन. दैट मीन्स द एंटायर सेक्शन 164 हैज टू बी रिटन, because we have to write all the provisions regarding disqualification. Now here I have written some opening lines. Although this opening line will not carry any marks and it is only for good impression. So these lines are advisable for students who are aiming for a rank, the students who are expecting that they have a preparation and that they can secure 80 plus in law. तो उनको अपने आंसर्स में एक एडेड एडवांटेज, एक एस लेना पड़ेगा, तभी उनको 7 में से 7 मार्क्स मिलेंगे. द एवरेज मार्किंग ऑफ एवरी क्वेश्चन वुड बी समवेयर अराउंड 3 to 4. मोर देन 4 इज ग्रेट एंड लेस देन 4 इज समथिंग वेरी वीक, बट 3 से 4 नंबर एवरेज मिलता है 7 मार्क्स के क्वेश्चन पे. ऐसे आपको 3 इस टाइप से मिल सकता है, 2.5 मिल सकता है, 2.5 और मे बी 4 also. But if you are getting more than 4, that means something you have written well. And if you want to get 7 on 7, नमक चाहिए, ठीक है? वो नमक कौन सी लाते हैं? ये opening lines. What are the opening lines, ma'am? Law does not specify any qualification. Only individuals. Even ये line भी आप छोड़ सकते हो. ये line बहुत important है. This line is very important. Only individuals who are disqualified under section, who are not disqualified under section 164, competent to contract and have done, can be appointed as directors. तो इसमें हमने 3 चीजें बता दी कि सबसे पहली बात है, someone who is not an individual cannot be appointed as a director. Someone who is not disqualified cannot be appointed. This is an opening line. Again, I'm saying it's not something which is very important. Now, if we move further, a person shall not be eligible for appointment as a director of a company if, ये आप ऐसे भी लिख सकते हो, following persons are disqualified to be appointed as a director. You can write it anyway. इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि नहीं हमको एकदम लॉ की लैंग्वेज ही लिखनी है. You can write this. और इसमें कोई नंबर कटने वाली बात नहीं है. Then we come to every point. Okay, if you have a paper and pen, please write with me. भाई जब मेरे साथ आप 30-40 minutes लगा रहे हो, it's good ना that you will be able to write 2 answers along with me. So if you are here with me, please write. Following persons are disqualified under section 164.
and cannot be appointed as a director if, okay, he is of unsound mind and stands so declared by court. Now there is something that I have highlighted over here. मैंने क्या highlight किया है? Unsound mind declared by court. सो सिर्फ अनसाउंड माइंड लिखने से नंबर नहीं मिलते हैं, डिक्लेयर्ड बाय कोड भी आपको ऐड करना पड़ेगा. मैम व्हाई हैव यू रिटन 0.5 मार्क्स ओवर हियर? इज इट समथिंग विच इज गिवन बाय इंस्टीट्यूट, सजेस्ट करता है, ब्लूप्रिंट है? नथिंग एट ऑल. बट over the experience, over the years, the experience or the analysis that I have gained suggest this कि अगर एक 7 marks का question है and you have this much content to write, this is the step marking which will be awarded for a particular point. ठीक है, so institute definitely gives you step marking, ये आप सबको पता होगा by far, right? So this, अगर ये point लिखेंगे तो सिर्फ आधा नंबर मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा. Okay. Second is not insolvent but undischarged insolvent. There is a difference. There is a difference, and I have explained you the entire process of insolvency in detail. कि कब undischarged होता है, पहले हम application देते हैं, etc., right? So somebody who is undischarged insolvent is disqualified. तो again ये दो words जो हैं ये हमारे keywords होते हैं. Many a time student ask me how to identify keywords. Ma'am, you keep on saying that your questions should have keywords, then you will get marks. It's not about the language, it's not about the connecting words, it's about the keywords. So what are the keywords? ये जो highlighted content आपको दिख रहा है ना, these are the keywords. And this you cannot change. Okay? This you cannot change. So you have to write it like this only. Okay? Right. Now, next is he has applied to be adjudicated as an insolvent and his application is pending. So if you have applied for insolvency, that you want to be adjudicated as insolvent and your application is pending, so the entire thing has to be written. Next comes, this is a big point and eventually may carry 1 mark. So you might think that there are let me write 7 disqualifications because the question carries 7 marks. So I will write 7 disqualifications and I'll get 1 mark for each disqualification that I write. And then you're writing unsound mind insolvent and then you think that I should get 2 marks. No, you'll not get, right? So some points may carry more marks, some points may carry less marks because they're easier points to write. Right? So these points might eventually carry only half marks. However, this point may carry 1 mark. Now, in this point, what is more important to write is this first part. Right? However, when you write the entire thing, then you can expect full marks. Right? What is there in this particular point? Someone who is convicted. Convicted means what? Find guilty, right? Although this is a question of MQP only where I have discussed. So if you want to check out the question and understand everything, you can also check out my MQP video which I've already pushed, right? Here we are only trying and learning the tips and tricks of writing answers. Ma'am, do we need to write like A, B, C, D? Or we can just write it anyway, 1, 2, 3, 4, C. One thing which you should avoid is this, as well as this. Even if it is a clause, please avoid both these things. Why, ma'am? Because there may be a question, it's like 7A. You are answering answer 7A. Now, when you're writing 7A and again you write something and you keep writing A, B, it might confuse the examiner. Right? So avoid this. Instead, what you can do is just write an arrow. Right? It won't take much of your time. Right? So try to make some bullets. Okay? Because you will eventually not remember exactly all the clause numbers. It's difficult to memorize the section numbers. How can you expect that I will remember all the subsections and clause that I am stating only A and B, that I will write it correctly? No. Avoid this. Okay. So the only point of provision is fine, ma'am, right? Yes, it is fine. Okay. The case study, this is not a case study based question. This is a direct question. So you'll start writing directly. That's completely fine. This particular line you will use if you want to make a good impression. If not, you're not that target is not that
then you will straight away start that following persons are disqualified to be appointed as a director of the company, and then you will start writing the points. It's completely okay, it's completely fine. This should be avoided. Instead, write an arrow. Now, one more thing which you all should do, because it is expected that you will get a question of 7 marks, start a stopwatch. Okay, pick up any question of mqp, pick up any question of mqp which you feel you're confident about. Start that stopwatch and start writing that answer. Okay, you have to accordingly see that if I am writing a question of 7 marks, how much time I am taking to write the complete provision that I know and I must write, and what is the standard time which should be taken. तो कितना टाइम लगना चाहिए और कितना टाइम मैं ले रहा हूं, उसको एक बार कंपेयर करके देखो कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो. क्योंकि काफी हाई चांसेस होते हैं कि लॉ में अगर बच्चों के पास नॉलेज नहीं है, लिखने को नहीं है, तब तो आराम से पेपर टाइम पे कंप्लीट हो जाता है. बट इफ यू हैव नॉलेज एंड यू हैव द कंटेंट टू राइट एंड डिलीवर, तो आप क्या करते हो, पेपर छूट जाता है. तो पेपर भी नहीं छोड़ना है हमें और अच्छा लिखना भी है. तो उसके लिए थोड़ा सा आइडिया बहुत ज्यादा जरूरी होता है. यू ऑलवेज मस्ट एसेस योर एनिमी, है ना. अपने शत्रु के बारे में हमेशा पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसको डिफीट करना है. तो यहाँ पे हमें, हमारा शत्रु कौन है, इंस्टीट्यूट या पेपर नहीं है. हमारा शत्रु या हमारी एनिमी इज आवर ओन फियर्स, is our own failures, right? We have to defeat that. So we must know कि कहाँ हम चूक सकते हैं. Okay? चलो, डोंट हाईलाइट एनीथिंग. इन सब चक्करों में मत पड़ो. ये हमें हाईलाइट करना है. यहां मैंने क्यों हाईलाइट किया है, ऐसे आपको लिखना नहीं है. मैंने इसलिए हाईलाइट किया बिकॉज स्टूडेंट्स गेट टू नो व्हाट द कीवर्ड इज. उनको पता होना चाहिए कि ये चीज तो हमें लिखनी ही लिखनी है. उसके बाद हम आगे पीछे वी कैन फ्रेम द सेंटेंस टू ब्रिंग आउट द इंटेंडेड मीनिंग. बट दीज आर द कीवर्ड्स विच मस्ट बी देयर. होना ही होना चाहिए. इसलिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया. आपको हाईलाइट नहीं करना है, आपको अंडरलाइन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है. एक केस में आपको अंडरलाइन करना है, वो भी सिर्फ टाइम लिमिट्स वगैरह जो होती हैं या अमाउंट जो होता है. अमाउंट तो खैर दिख जाता है, बट टाइम लिमिट्स या कुछ एक ऐसी इंपॉर्टेंट क्रिस्प पॉइंट है एंड योर हैंड राइटिंग इज वेरी पुअर, तो आप हाईलाइट, वो तो आप अंडरलाइन करिए. अदरवाइज डोंट डू एनीथिंग लाइक दैट. ओके, डोंट स्टार्ट योर पेपर बाय राइटिंग एनी गॉड्स नेम. ठीक है, तो ऊपर ऐसे जो स्वास्तिक बनाते हैं या ओम लिखते हैं या कुछ भी आप लिखते हो, यू डोंट हैव टू डू दैट. ओके, भगवान का नाम ले लो मन में एंड स्टार्ट राइटिंग द पेपर. डोंट पुट इट ऑन द पेपर, राइट. पेपर पे सिर्फ अपनी बेहतरीन नॉलेज डिलीवर करनी है. ओके, मैंने पहले भी कहा है, आई विल वंस अगेन से दिस थिंग. आई होप यू नो एंड यू हैव लर्नड समथिंग ब्यूटिफुल फ्रॉम द वर्ल्ड कप दैट जस्ट हैपेंड. आप कितने भी क्यों ना अच्छे हो थ्रू आउट, मे बी योर प्रिपरेशन हैज बीन ट्रेमेंडस, मे बी यू हैव डन एवरीथिंग अप टू द मार्क. इफ यू डोंट परफॉर्म वेल इन दोज लास्ट 3 hours जो आपका एग्जाम टाइम होगा, तो इट्स ऑल कोई काम का नहीं रहता है. तो जो हमारी इंडियन टीम के साथ हुआ, दे हैव बीन सो कंसिस्टेंट, सो वंडरफुल थ्रू आउट द टूर, आई वुड से. बट लास्ट वो जो फाइनल्स, वो कसक रह गई ना, वो तो नहीं मिला जो चाहिए था. ऑफ कोर्स यू गेट अ लॉट ऑफ एप्रिसिएशन फॉर योर एफर्ट्स एंड एवरीथिंग, यू विल आल्सो गेट, बट क्या वो चाहिए हमें? नहीं चाहिए. हमें क्या करना है? एग्जाम क्लियर करना है. तो फोड़ के अगर आना है, इफ यू वांट टू गेट दैट विक्ट्री, तो वो लास्ट के 3 hours जो है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो 3 घंटे एकदम रॉक कर देना है. ओके, सो लाइकवाइज यू हैव ऑल दीज पॉइंट्स एंड इवेंचुअली दे आर कैरिंग 0.5 marks each. Thereafter, again, this is a line which explains this. So this is not needed. Not needed in all cases. ठीक है, अगर आप बहुत अच्छा एम कर रहे हो तो आपको ये ज़रूरी है, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है. ठीक है, ये बहुत लिखना ज़रूरी है. एंड आई वुड से ये 2 पॉइंट जो लास्ट में स्टूडेंट स्किप कर देते हैं. वन इज दैट सेक्शन 164(2) इज नॉट एप्लीकेबल टू अ गवर्नमेंट कंपनी, एंड सेकेंड दैट अ प्राइवेट कंपनी कैन प्रोवाइड एडिशनल ग्राउंड्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन. ओके, सो ये दोनों पॉइंट्स भी लिखने ज़रूरी हैं अपने आंसर पे. सो ideally, if you write all these points in the intended meaning containing all keywords, then you will get 7 out of 7. मैम क्या 7 में से 7 मिलते हैं?
100% मिलते हैं। कितनी सर्टिफाइड कॉपीज में हमने देखा है कि फुल मार्क्स भी दिए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि फुल मार्क्स नहीं दिखते हैं और इंस्टीट्यूट में एग्जामिनर कुछ पढ़ता नहीं है, एवरेज मार्किंग ही दे देते हैं, 2 नंबर 3 नंबर और सबके 50 नंबर आ रहे हैं। तो ऐसी मिथ्स, ऐसी अफवाहों से प्लीज दूर रहना। Proper, they evaluate your copies and they give you marks according to what you deserve. Okay, there could be slight variation of marks. आपने और आपके फ्रेंड ने सेम लिखा, आप लोगों को अलग मार्क्स मिल सकते हैं because it is a subjective paper and it depends on what the examiner perceives, right? But eventually वो थोड़ा सा वेरिएशन होगा, बहुत ह्यूज वेरिएशन नहीं होगा। ओके, नाउ in OPC, member can be resident or non-resident. It can be both. Long back it has been amended. See, okay. So in OPC, the sole member or the nominee may be a resident, may not be a resident. Ma'am, in this video for CMA Inter as well, yes, it is for CMA Inter as well. A few tips for scoring exemption. कुछ मैंने स्टार्टिंग में आपको टिप्स बताई हैं, ठीक है, एंड इवेंचुअली मैं आपको बीच बीच में बताती जा रही हूँ। नाउ I'll come back to the case study based questions now. Case study based questions, usually students think that they should be writing in 4 paragraphs. They should be writing in 4 paragraphs, right? सबसे पहले क्या होना चाहिए मैम? सबसे पहले we should write the provision, thereafter we should write what is given, thereafter we should write the analysis, and thereafter we should write the conclusion. One harsh truth about CMA exams and the suggested answers is that they don't believe in conclusions. However, it is very, very, very important to conclude answers. Okay, don't forget the conclusion ever. But having said that, ये जो हमारा given और analysis वाला paragraph होता है, this does not carry any marks. So the most important thing is provision. So the entire focus should be on provision. If you have a 7-mark question, the entire time that you should devote should be on writing provision, and thereafter one slight moment you should take to conclude your answer. ठीक है, तो सबसे ज्यादा हमें किस पे फोकस करना है मैम? सिर्फ और सिर्फ प्रोविजन पे। अब प्रोविजन व्हेन यू राइट, देयर आर 2 situations. Sometimes you remember the section number, sometimes you don't remember the section number. If you remember the section number, great, go ahead and quote it. How can you start your answers if you remember the section number and you're writing case study based questions? तो आपको क्या लिखना है? In accordance with, according to section 8, जो भी है हमारा section 8 of Companies Act states that the given problem relates to this section as per the provisions of this section. Section 8 of Companies Act empowers CG to do so, or section 8 of Companies Act provides for. So there are various ways which you can start your answer with. बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता even if you start your every answer with according to the provisions of Companies Act or according to section 8 of Companies Act. ठीक है, but yes, this is important for or this is relevant for the students who are aiming for a rank. If you do not remember the section number or if you are confused about the section number, please don't quote it. क्या करना है फिर मैम? The relevant provision of Companies Act states that according to provisions of Companies Act, in accordance with the law made in this regard, कोई भी opening line उठाओ और लगा दो. Okay? Don't think twice. Fine, ma'am. How to conclude? There are different ways of conclusion also, but before we actually go on to conclusion, let's have a look at the second question or the case study that I am going to discuss now. Again, it is a question of MQP only, and I have discussed this question in both the in CMA Inter वाली MQP का ये question है. However, it is equally relevant for CMA Final also because आपके company formation and conversion के chapter में ये question आता है. Okay. PPIRP is 100% applicable. ठीक है, तो PPIRP बिल्कुल आप करो. Small company, yes. The paid up capital and the turnover, the enhanced limit is 4 crores and 40 crores respectively. Okay. No, ball pen only. Okay. हाँ, चलेगा.
ठीक है. Literally, I wrote answer with key points and conceptually, although did not attempt full 100 marks, but I got only 41 in law. Please tell me how can I get good marks in this term? See, this is a specific question, student related question. मतलब सिर्फ आपसे related ये particular question है. How did you write the answer? I don't know that, right? Have you got your certified copy? If you have got your certified copy, please try to analyze. If you haven't got, तो भाई आप सिर्फ कोशिश कर सकते हो. अब तो कोशिश करो कि और अच्छे बेहतर आंसर्स हम लिखें, जैसे सजेस्ट किए जाते हैं आप वैसा लिखो. बट इफ़ यू हैव गॉट योर कॉपी, प्लीज़ ट्राई टू एनालाइज दैट व्हाट वेंट रॉन्ग. 2-4 क्वेश्चन में हो सकता है आपको लगे कि नहीं मुझे मार्क्स कम मिले हैं, बट इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एवरेजिंग या बैलेंसिंग अगर आप करो तो आपको समझ में आएगा. यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स. ठीक है, इफ़ यू हैव दैट माइंड सेट, आप अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करने वाला माइंडसेट के साथ करो, यू विल गेट दैट, राइट? बिकॉज आई डोंट नो लाइक दिस ना कि आपने क्या लिखा है या क्या नहीं लिखा है बच्चे. राइट, 4 and 40 crores, करेक्ट. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. एवरीवन look over here. The management of Ambika Properties Limited has decided to take up business of chemical processing activity because of the downward trend in real estate business. There is no provision in the object clause in the Memorandum of Association to enable the company to carry out such business. State with reasons. देखो, सुनना बहुत ध्यान से. यहाँ क्या लिखा है? रीजन के साथ बताइए whether its object clause can be amended or not. And if you look at the suggested answer, they don't conclude the answer. वो ये बताते ही नहीं है that yes, whether you can amend your object clause or not. And the second question is, state briefly the procedure to be adopted for change in object clause in the light of Companies Act 2013. Avoid writing with the gel pens. That's my sincere request to you. Okay. Now, there are 2 questions which have been asked in this particular case study based question. दोनों का आंसर देना है मैम, ठीक बात है. But tell me one thing. It is a 7-mark question. Has it anywhere been written कि इस particular company ने पैसे रेज किए थे prospectus and thereafter they want to change their object clause? The answer is no. It has nowhere been written this. So if we just straight away look at a particular question that there is a company and they want to change their object clause, pass a special resolution and change your object clause, that's it. Yes, you can alter your object clause by passing SR and filing it with ROC, that's it. Right? तो procedure तो बस इतना सा ही है. But because it's a 7-mark question, we cannot write only this much. Right? So now what we will do is we will assume this particular question जो हमें पता है. हमारे लिए क्या relevant provision है ये? यही तो हमने पढ़ा है alteration of memorandum के object clause में, that if there is a company which has raised money through prospectus but hasn't utilized the entire money, then it cannot change its object unless it follows this entire procedure. So it has to publish an advertisement also, it has to give an exit opportunity to the dissenting shareholders also, right? तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई? ये लिखना पड़ेगा. Although सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो तो इसकी जरूरत ही नहीं है बेटा, but then you need to write it, right? Okay. No, you don't have to be scared. So मैंने यहाँ पे देखो क्या लिखा है और किस तरीके से लिखा है, how you should do that. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में when the question content is small, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारे पास कंटेंट नहीं है and it's still a 7-mark question. सेक्शन नंबर ऑल्सो होल्ड सर्टेन इम्पॉर्टेंस. ठीक है, तो सेक्शन नंबर अगर आप लिखते हो देयर आर हाई चांसेस दैट यू विल गेट फुल 7 marks. ओके, हाउएवर इसको आपको कैसे लिखना चाहिए? सेक्शन 13 स्टेट्स द प्रोसीजर फॉर ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम. Objects of a company are contained in the object clause and can be changed in general by passing special resolution. However, if now this entire provision, as I explained you, this is going to contain the major marks. This is only suggestive marking scheme which I am telling you. I'm giving you a disclaimer. Please don't compare it with institute certified copies कि मैम आपने तो कहा था इस पे 1 number मिलेगा. Institute is not giving us 1 mark.
This over the years we have analyzed, and based on the experience we believe this to be the step marking. Of course there can be variation, it can be changed, but in general हम ऐसा ही expect करते हैं. Okay, thereafter you also need to write two points relating to section 13 subsection 9 and subsection 10, right? Or lastly conclusion भी देना है. Although maybe in most of the suggested answers by institute, you will not find the conclusion, but you must conclude. So in the absence of complete information, it is presumed that Ambika Properties Limited falls in the above case. Hence, by complying with the above stated procedure, it can alter its object clause. So yes, it can alter its object clause, and the procedure which has to be followed is stated as under. Right? तो ये दोनों चीज आप लिखेंगे, ये पूरा लिखेंगे, then you will have that liberty and the privilege of getting full 7 marks. ठीक है. हाँ, how many questions you expect, that nobody can tell you. If I tell you expect 2 questions from FEMA, 1 question from banking, I am a fool and you are the biggest fool to listen to me. ठीक है. तो ऐसी कोई भी चीज कहीं पे भी कोई बोल रहा है ना, तो अपने आंख कान नाक मुंह बंद कर लो, क्योंकि वो आपको सिर्फ भ्रमित कर रहा है. ओके, दैट पर्सन इज एक्चुअली नॉट ट्राइंग टू हेल्प यू. सो don't fall for the trap of selective studies. Yes, what you can do is you can refer to the most expected or the most important set of questions which you must leave, which you must not leave. छोड़ के नहीं जाना है. तो ऐसे questions for CMA Inter as well as CMA Final ये मैं ज़रूर लेके आऊँगी, and we will have a discussion on the same. Hope you all have understood through this particular session that how you should write your answers. ठीक है. This has nothing to do with bad English language. Of course, if you know good English, it is easier for you to write answer. But even if your English is not that well, please remember and learn the keywords so that at least you are able to write that and you get marks. ठीक है. Neat handwriting is more important than beautiful handwriting. So try to write neatly every new question on a different page. Select the best answer first. पहला आंसर जो आप लिखोगे, दैट शुड बी योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, बिकॉज दैट इज गोइंग टू लीव अ वेरी गुड इम्प्रेशन ऑन द एग्जामिनर. सोचो, अभी तो आप लोग ऐसे फेज में हो दैट आई डोंट इवन वांट टू से सच थिंग्स, बट मोर ओवर इन फ्यूचर यू विल इवेंचुअली गेट मैरिड एंड सपोजली यू गेट अ प्रपोजल, और वहां पे आप इवैल्यूएट करने जा रहे हो वेदर दिस पर्टिकुलर बॉय विल बी फिट इनफ फॉर मी और नॉट, और वेदर दिस पर्टिकुलर गर्ल विल बी वेल सूटेड फॉर मी और नॉट, एंड शी इज ड्रेस्ड इन अ पैकेज और ही इज ड्रेस्ड इन अ पैकेज विच टर्न्स यू ऑफ कि अरे यार ये क्या पहन के आया है, ये क्या पहन के आई है. तो वो फर्स्ट इंप्रेशन ही इतना खराब बनेगा ना कि अब आप हर एक चीज को नेगेटिवली देखने लगोगे. राइट. तो एक एग्जामिनर पे व्हाट द फर्स्ट इंप्रेशन यू लीव टेक्स यू थ्रू, वो इवेंचुअली आपके 2-4 नंबर ना बढ़ा देता है, बिकॉज एग्जामिनर वो फर्स्ट आंसर चेक करेंगे एंड दिल बी लाइक ओ माई गॉड दिस बॉय हैज समथिंग. राइट. फिर वो क्या करेंगे, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ दिल चेक योर कॉपी. ओके, सो डेफिनेटली बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो चूज योर बेस्ट आंसर. I'm recently received your nice books. Thanks for your efforts. Thank you so much. Section number. See, writing section number ultimately holds a lot of importance. However, प्रोविजन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है. सबसे महान, सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा नंबर स्कोर करने वाली चीज़ है प्रोविजन. सो द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड कीप इन योर माइंड इज यू शुड राइट द बेस्ट प्रोविजन एवर. सो राइट एवरीथिंग दैट यू नो रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर प्रोविजन. ठीक है. Of course, within the time limit and within the asked question, मतलब जो भी रिवॉल्व कर रहा है उसी के अराउंड लिखना है, कुछ आउट ऑफ कंटेक्स्ट नहीं लिखना है. ओके. इफ़ यू रिमेंबर सेक्शन नंबर्स तो लिख दीजिए, एक अपर एज मिलती है. इफ़ यू डोंट रिमेंबर द सेक्शन नंबर्स, प्लीज डोंट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ कोटिंग इनकरेक्ट सेक्शन नंबर्स जस्ट टू मेक अ गुड इंप्रेशन. गलत इंप्रेशन पड़ जाएगा, तो वो नहीं लिखना है. ठीक है. याद ना हो तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, उससे नंबर कटते नहीं है. ठीक है.
तो आपको एवरेज मार्किंग ही मिलती है. एवरेज मार्किंग मतलब अगर बहुत अच्छा आंसर लिखा है, बहुत बहुत अच्छा आंसर लिखा है, तो येस यू मे ऑल्सो गेट 7/7, बट अदरवाइज सेक्शन नंबर्स वगैरह क्या करते हैं, एनहांस करते हैं, तो थोड़ा 19-20 भी होता है, देन ऑल्सो यू गेट 7/7. अदरवाइज ऐसा नहीं है कि कोई सेक्शन नंबर पे स्पेसिफिकली कोई स्टेप मार्क्स अलॉट होते हैं. नो मार्क्स आर अलॉटेड फॉर सेक्शन नंबर स्पेसिफिकली. ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट. Important questions list you will get. Now I am wrapping up this particular session. Stay positive, stay motivated. Nobody is going to motivate you every single minute. Okay, you have to have that self motivation. Take care of your physical health, take care of your mental health. Have extremely positive mindset. कुछ नहीं हुआ है अभी तक, कोई बात नहीं. अब जो भी पढ़ेंगे पहले से तो बेटर ही करेंगे ना. और अगर सब कुछ कर लिया है तो बस दिस इज द मौका जब हमें अपने माइंड से हारना नहीं है, उसको जिताना है. राइट, सो यूल बी एबल टू गेन मोर कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ एंड रीच योर टारगेट्स फास्टर. And remember, you have the power to take charge of your future. Only and only you have the power to take charge of your future. So make it count. Okay. So let's make this exam a great success with this session and more coming live sessions. Stay tuned. Wish you all the very best. So thankful for the wonderful students that I have through YouTube who are watching me. Thank you, bachon. See you all soon in the next session. If you have any doubt, of course, you can connect and drop in the comments. Okay, see you all in the next session. Stay tuned. We will schedule the next upcoming session. Okay, so you can get to know about it more. Okay. Thank you, everyone. Bye-bye. Take care.